Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss model textbook of physics, that is for first year. We are studying chapter number 4, rotational and circular motion, and today we are going to discuss the short conceptual questions of this chapter. So let's get started with this chapter. The first question that is for this chapter is, what is the value of angular displacement of the minute hand of your wristwatch in 1 hour? तो इसका आंसर ये है कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड इज 1 hour इन 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्रीज एज इट कम्प्लीट्स वन फुल रेवोल्यूशन. अगर हमारे पास एक मिनट हैंड होता है, वो जब आवर के लिए पूरा कंप्लीट करता है तो इट टेक्स द होल राउंड. ठीक है, तो जो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो थीटा में होती है. सो द थीटा इज 2 पाई रेडियंस, और वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स इन 360 degrees. So moving on to the next question, that is, define the following quantities. That is, first was angular velocity, and angular acceleration. So here's the definition. Angular velocity is the rate of change of angular displacement with time, and its unit is radians per second, as radians is the unit of angular displacement and second is the unit of time, so its unit becomes radians per second. Next is angular acceleration, and angular acceleration is the rate of change of angular velocity with time. Its unit is radian per second squared. It means that the value of angular velocity squared meter, and angular velocity with time, the unit of angular velocity is radians per second, and another second is added, so the unit becomes radians per squared. Next question is, determine the relationship between linear angular displacement. Linear and angular displacement can be determined by the relationship, that is S is equals to R theta. This is the direct relationship for the circular path, where S is the linear displacement, R is the radius of the circular path, and theta is the angular displacement. So this is the relationship between the angular displacement and the linear displacement. This is a direct geometrical relationship between the arc length and the subtended angle at the center of the circle. The next part of the same question is relationship between linear and angular velocity. Here we know that omega, that is the angular velocity, is equals to d theta change in angular displacement over time, and linear velocity is change of linear displacement over time. So we can for in the equation, that is S is equals to R theta, we can differentiate it both sides, that is ds by dt, and at the right hand side R is constant, radius of the circle is constant, so d theta by dt. So ds by dt is v, that is the linear displacement, change of displacement over time, and on the right hand, d theta by dt is the change of angular displacement over time. So by putting the values of those displacements, angular displacement and linear displacement, we get the relationship between them, that is v is equals to r omega, where v is the linear velocity, r is the radius of the circle, and omega is the angular displacement. So the third part of the same question is, we have to rewrite the relationship between linear and angular velocity. Here we are given with the rate of change of angular displacement, that is angular velocity. And linear velocity is the change in displacement. And this part is solved, and move on to the next part, that is part C. That is the relationship between linear and angular acceleration. Here we are given with the angular acceleration, that is the change of angular velocity over time, and acceleration is the change of velocity, linear velocity over time. So we know from the relationship between linear and angular velocity, v is equals to r omega. We get this relationship. Since r is a constant, we differentiate it, and here we get the substituting the value of d omega by dt, that is angular acceleration. We get the final relationship, that is angular linear acceleration is equals to r alpha, which is the angular acceleration. Next question, we have question number 4, which states that a centripetal force, a fundamental force, or a force provided by any of the fundamental forces. Can any combination of the fundamental forces provide centripetal force? इस क्वेश्चन में जो हमने ये बताने, दो पार्ट हैं, ये बताना है कि सेंट्रिपेटल फोर्स इज द फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, किसी भी फंडामेंटल फोर्सेस से, और क्या ये कुछ कॉम्बिनेशन से मिलके फंडामेंटल सेंट्रिपेटल फोर्स बनती है. So the answer of the first part is no, centripetal force is not fundamental force. Instead, it is a result of one or more fundamental forces acting upon an object in a circular motion. Centripetal force itself is not a fundamental force, but it is the result of one or more fundamental forces that are acting together in a circular motion. Circular motion provides centripetal force.
So next part is the combination. So yes, combinations can be provided with centripetal force. It depend upon the situation in which we are considering it. First is electromagnetic and gravitational force. In the certain astrophysical scenarios, both gravitational and electromagnetic forces may contribute to keeping an object in the circular motion. When electromagnetic force and the gravitational force both are acting parallel to the any object, it can move the object in a circular path, hence creating the centripetal force. The second is normal force plus friction. In a car moving on the bank curve, we have considered this example before. In the bank curve, the centripetal force is provided by both frictional and the normal force acting together on that body. Moving on to the next question, that is question number 5, which states that there are generally double tires in the heavy vehicles on one side of the axle. Will its momentum of inertia be different from that the single tire? इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उनके डबल टायर होते हैं, ठीक है, एक्सेल वाली साइड पे, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सो द डबल टायर इंक्रीजेज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेटिंग सिस्टम इनर्शिया को इंक्रीज कर देते हैं. इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? As inertia is directly proportional to the mass, so greater the mass would be the greater moment of inertia. So greater moment of inertia for the rotating body, which means that the greater torque it requires to change the rotational motion, start, stop, and accelerate. Okay. And next is stability in vehicle. Stability of the vehicle increases as higher moment of inertia resists sudden change in motion. जो जितना ज़्यादा moment of inertia होगा उतना ही ज़्यादा sudden change में जो है वो resistance आएगी. Hence stability increased. Moving on to the next question, that is question number 6, which is why it is best to have the blades rotate in opposite direction for a helicopter having two sets of lifting blades. एक helicopter है जिसके अगर two sets of lifting blades हैं तो why it is important to rotate them in the opposite direction? So the answer for this is having the blades rotate in opposite direction cancel out the torque generated by each set of blades. जब दो opposite, so if the body rotates around, two bodies rotate, they cancel out the torque produced by each other, preventing the helicopter body from spinning uncontrollably. अगर एक साइड पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो द बॉडी ऑफ द हेलीकॉप्टर could rotate in that direction. तो जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो द बॉडी ऑफ द हेलीकॉप्टर रिमेन स्टेबल. This ensures stability, eliminates the need for the tail rotor and allow efficient lift and thrust generation. यानी वो easily lift हो जाता है और वो जो है stability को increase कर देता है. So that's why we need to rotate in opposite direction so that the torque can be cancelled. Moving on to the next question. So the question number 7 is what happened to the angular velocity of the radius become half? So जब radius हमारा half हो जाएगा तो हमें inertia का formula पता है, that is 2/5 mr square. यहाँ पे r जो है that becomes half, so putting the value of r as r/2. Hence inertia becomes 1/4. जब ये square है यहाँ पे square से 1/4 वैल्यू होगी, उसको हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर जो है वो अगेन इनर्शिया हो जाएगा, तो I bar is equal to 1/4 I. So the moment of inertia reduces to 1/4 of its value. In order to calculate the rotational speed, we know that angular momentum is given is to I omega. ठीक है, I के यहाँ पे हम अगर so both are constant, L is constant, so I omega is equal to before and after. So I omega की value जब हम put करेंगे, so the omega sharp becomes 4 omega. So the rotational speed of the earth becomes 4 times faster. Now moving on to the next slide. The next question is question number 8, which is why does in circular motion a tangential acceleration can change the magnitude of velocity but not its direction? तो circular motion में जो tangential acceleration होती है वो magnitude of velocity change करते हैं, not its direction. So why does it happen? So the answer is tangential acceleration changes the magnitude of velocity because it acts along the direction of the motion. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है उसी एक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है, दैट इज टेंजेंट टू दैट मोशन, but it cannot change the direction which is instead governed by centripetal acceleration acting perpendicular to the motion. जो डायरेक्शन होती है हमारी वेलोसिटी की दैट कैन बी चेंज ड्यू टू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारी कौन सी को हम कंसिडर करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंशियल जो है दैट चेंजेस द मैग्नीट्यूड व्हाइल द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. Next question, we have question number 9, which is why does usually the value of artificial gravity smaller than 9.8? 9.8 जो है वो हमारी नॉर्मली वैल्यू है, तो जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है उसकी लेस क्यों होती है 9.8? So the answer is the value of artificial gravity is usually smaller than 9.8 because creating it requires balancing practical constraints like rotational speed, structural limitation, and occupants' comfort.
हम लोग जब क्रिएट कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट को बैलेंस करना पड़ता है, जो कि होते हैं जैसे रोटेशनल स्पीड होगी, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, यानी जिस तरह का स्ट्रक्चर है आसपास का, उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए ग्रेविटी जो है वो काफ़ी ऐसी आर्टिफिशियल ग्रेविटी इतनी होती है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर हेल्थ एंड ऑपरेशन नीड्स होता है, तो दैट इज़ हम उसको बनाते ही इसलिए ताकि हम लोग जो नेचुरल ग्रेविटी है उसको ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट इज वाई इज गायरोस्कोप यूज्ड इन एरोप्लेन। गायरोस्कोप क्यों यूज़ किया जाता है? दिस इज अ डिवाइस, तो वो क्यों यूज़ की जाती है? गायरोस्कोप इज यूज्ड इन एयरप्लेन फॉर नेविगेशन एंड स्टेबिलिटी because it provides accurate orientation that help maintain balance. It is basically used for the navigation of stability, कि कितनी स्टेबल है हमारी एरोप्लेन। जो कि होता है एटीट्यूड इंडिकेटर। गायरोस्कोप से हम क्या बता सकते हैं कि हमारी एयरक्राफ्ट की ओरिएंटेशंस कैसी है, वो हॉरिजन से किस तरह है, ठीक है। डायरेक्शनल गाइडेंस हमें उससे रिलायबल डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम होगी और कहाँ ज़्यादा होगी। इन ऑटो पायलट सिस्टम, ऑटो पायलट सिस्टम जहाँ पे कोई भी एयरप्लेन खुद रन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एयरक्राफ्ट को हम लोग जो है दैट इज गायरोस्कोप इज यूज डिटेक्टिंग एंगुलर चेंजेस अलाउइंग ऑटो पायलट सिस्टम टू मेक प्रिसाइज एडजस्टमेंट। ये क्या करता है, हमें एंगुलर चेंजेस का बता रहा होता है, जिसकी वजह से ऑटो पायलट कैन एडजस्ट itself according to it. नेक्स्ट इज हाउ द रोटेशन ऑफ फ्लाईव्हील हेल्प्स टू इवन आउट द पावर डिलीवरी फ्रॉम द इंजन। ठीक है, जो रोटेशन ऑफ फ्लाईव्हील होती है वो कैसे हमें बताते हैं। द रोटेशन ऑफ द फ्लाईव्हील हेल्प इवन आउट पावर डिलीवरी बाय स्टोरिंग एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ एन इंजन एंड रिलीजिंग इट ड्यूरिंग नॉन पावर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक आ रहे होते हैं तो एनर्जी को वो क्या करता है, स्टोर करता है, और जब हमारे पास नॉन पावर होती है तो उसको रिलीज किया जाता है। सो एनर्जी स्टोरेज ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, जब पावर स्ट्रोक होता है एनर्जी जनरेट होती है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और एनर्जी रिलीज जब नॉन पावर स्ट्रोक्स होते हैं तो वो इस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। स्मूथ पावर आउटपुट, जो पावर होती है, फ्लक्चुएशन जो रहते हैं उनको इजीली स्मूथली एक दूसरे को तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, and if you like the video, like, share and subscribe, and we'll see you in the next lecture.